Hello, my dear students. In this video, I will tell you about how to find the adjoint and inverse of the matrix, any square matrix. So, inverse of the matrix A and adjoint of the matrix A. Here I have made the several videos about the matrix and the determinant. You can see in the Study Bright channel. So you will get the knowledge about the determinant and the matrix. This is the continuation. This is in continuation. That is the what is adjoint and inverse. Before that, I want to tell you that इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स मींस द मैट्रिक्स विच हैज द ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4 मींस द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल. बट one more condition for finding the inverse. When you have a matrix A, means square matrix A, then first of all you find the determinant of A. Means how to find the determinant of any matrix, that I told in the earlier video. What is the meaning of the determinant and how to find the determinant. After finding the determinant, if you are getting non-zero element, मतलब कोई नंबर ऐसा जो non-zero हो, zero नहीं, in that case the inverse of the matrix is possible. Otherwise it is not possible. अगर zero आ रहा है then you can write directly the matrix, the inverse of the matrix does not exist. That is sufficient. So before that, in the inverse of the matrix there is a formula, and in the formula the adjoint is used. Adjoint of the matrix. How to find the adjoint of the matrix, that I am going to tell you. Do you know to find the cofactors of any matrix? Yes, because in the earlier video I have told already how to find the cofactors. Here I have taken the one matrix, that is A, 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4. 3 cross 3 matrix. First you find this one, the cofactors of the matrix. A11 minus 2 means A21 10, A31 8, A12 A13, A22 A23 32 means every. How to find the cofactors, that I revised one thing, that is take this element, first row, the first element, and then horizontal line, imaginary horizontal line, imaginary vertical line, जो दोनों लाइन 5 को क्रॉस करें, horizontal or vertical. Then the remaining element you multiply by this way, 1 into 4 minus 2 into 3, 4 minus 6, that is minus 2. So this is the method, and for this 3 also you take the one vertical line from 3, one horizontal line from 3, then these 4 elements are remained, then multiply 4 to the 8 minus 3, so that will be the 5. So you can find this one. Now I am writing here cofactors of A is equal to A11, A12, A13. You write accordingly. ऐसे लिखा जाता है रो 1 के एलिमेंट से, तो -2, 5, 3, then 10, 19, 7, then 8, 13, minus 1. After finding, this is can you say that this is the cofactor? No, this is the minor. अब cofactor निकालने जा रहे हैं. हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब ये A11, A12, A13 ये सब निकाल लेते हैं, तो you know the original sign of the determinant. Here at 4 position the minus sign, and the 5 position the plus sign. It means you have to change the sign of these places in the minus. ये minus है. अभी अब हम कोफैक्टर निकालें तो चेंज द साइन ऑफ दिस एलिमेंट
दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। अगर कहीं इसके साथ माइनस साइन होता ऑलरेडी पहले से ही तो वो प्लस हो जाता है। मींस चेंज द साइन ऑफ दीज 4 एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिनल साइन ऑफ द डिटरमिनेंट। ये पहले बता चुके हैं। तो इसको ये कोफैक्टर्स हैं, ये मतलब क्या है यहाँ पे कोफैक्टर्स, इनको ही कोफैक्टर्स कहते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स you can find the adjoint. So what is the formula of the adjoint? I tell you, the adjoint of the matrix you can write like this: adjoint of A is equal to, this is the formula, transpose of cofactors of A. This is the formula, transpose of cofactors of A. यानी ये जो निकली है मैट्रिक्स इसका आप ट्रांसपोज करें। एंड हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज? दैट इज जस्ट ओनली इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, देन यू विल गेट फर्स्ट रो -2, -5, 3, -10, 19, -7, 8, -13 and -1. First row changes into the first column, second row changes into the second column, and third row changes into the third column. This is called transpose, and this is the adjoint A. Clear? So how to find the adjoint A? Find the cofactors, write in the order, and then take the transpose of the cofactors. You will get adjoint of A. After finding adjoint of A, you have to find the inverse. So what is the formula for the inverse of the matrix? Inverse of the matrix is equal to adjoint of A divided by determinant of A. ये formula, that is why I said earlier that you have to first find the determinant of A. अभी निकाला नहीं था, लेकिन क्वेश्चन जब भी करना तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि इनवर्स निकालने के पहले डिटर्मिनेंट। इसलिए if you are getting determinant is equal to 0, it means it will not give any value. This is not defined, क्योंकि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो you will get infinity. तो in that case you can write directly the inverse does not exist. Okay. So what you will write here? First you find the determinant of this matrix. So how to find the determinant? You know how to find the first row. Expand from the first row, so that is 5 into 4 ones are 4, -6, -2, -3, and then 4 twos are 8, -3, that is 5, and plus 1, so it will be 4 -1, 3, and then simplify -10, -15 and plus 3, that is -22. This is the determinant of A, that is not equal to 0. ये not equal to 0 आ गया, इसका मतलब inverse exist कर रहा है। Now you put in this formula the value of adjoint A and value of mod. तो हमने ये adjoint A निकाला ही था, डायरेक्टली हम उसके बाद इसको लिखे दे रहे हैं। You can divide by -22, -22, ठीक है, 1 upon -22, क्योंकि ये 1 upon में। अब यदि जरूरत है तो माइनस को अंदर ले गए, दिस इज द A इनवर्स। नाउ माइनस को अंदर ले गए, या 1/22 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यू कैन डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ज्यादा नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो सकते हैं तो ले गए, अदरवाइज यू लीव हियर। लेकिन हम देख रहे हैं कि माइनस साइन यहाँ जाता है, ले जाने में ज्यादा इजी होगा, तो एक बार हम लिखे दे रहे हैं, दैट इज 2, 10, -8, 5, -19, 13, -3, 7 and 1. 1 upon 22 and this the value. So this is the answer for the A inverse. Now some formulae, or you can say the properties of the adjoint and inverse. तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स एंड द एडजॉइंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी
if anybody says in any question that find the A dot adjoint A, या adjoint A dot A, मतलब adjoint A और dot A, मतलब ऐसे निकालना है कि adjoint A निकालने, A से मल्टीप्लाई करें या इधर से मल्टीप्लाई करें इधर से, ये ज्यादा लंबा होगा. इट विल बी द विच विल टेक द टाइम, क्योंकि पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, देन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. बिफोर दैट इफ यू फाइंड डायरेक्टली इफ इट इज ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, देन यू कैन राइट इज इक्वल टू, बोथ आर इज इक्वल टू mod A into I3. I3 means unit matrix of 3 cross 3. Unit matrix of 3 cross 3. कभी 2 cross 2 होगा तो यहाँ I2 लिखा जाएगा, 2 cross 2 matrix, unit matrix. तो if without finding this one, if you find this one, then you will get answer, the same answer. तो पहले mod A निकाल ले, उसको अंदर unit matrix में मल्टीप्लाई कर ले, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. Second rule in this for the inverse matrix, second rule, एक वर्ड आता है सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर. Singular या non singular, I told earlier that if determinant of any matrix is equal to 0, then this is called the singular matrix. So for singular matrix what you will write? The determinant of A is equal to 0. This is for singular matrix. अगर कहीं लिखा हो कि the matrix is singular, तो मान लो कि उसका determinant 0 के equal होगा. And for non singular matrix the determinant of A is not equal to 0. तो अगर कोई पूछे कि what is the मतलब कि which type of matrix exist inverse या invertibility, तो non singular matrix exists the inverse, क्योंकि इसी में not equal to 0 है. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको भी आप समझ सकते हैं. तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स. देन one A B, if you multiply these two matrices and take the inverse, instead of this one you can write B inverse dot A inverse, means the matrix multiply then you take inverse, और पहले हम B inverse को और ले dot A inverse, दोनों को अलग अलग inverse लेकर के multiply कर सकते हैं. तो both results are equal. So this is the result for the matrix multiplication. Then third property, if you have कहीं कहीं पे मैट्रिक्स जैसे ये A into B है, A into A हो जाए तो it will be A square, A cube, इस तरह से हो सकता है. तो अगर if you have the A to the power m and then minus 1, means inverse of the A into A into A into A into like this, you can write first the inverse also and then take the power. पहले inverse निकाल के उसके बाद भी multiply कर सकते हैं, तो both are same. So this is the property of the inverse. Fourth property, if you have transpose of the matrix and then take the inverse, otherwise the same thing you will get when you have the inverse and then take the transpose. तो दोनों चीजें सेम, चाहे हम ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स करें या इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज करें, in both the cases you will get the same value. The last one is the combination of the adjoint and means this determinant and the adjoint. कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि find the mod of adjoint A. Find the mod of adjoint. Mod means the determinant of the adjoint A. तो पहले क्या करना पड़ेगा? Adjoint निकालना पड़ेगा, means taking cofactors and other thing, and then you will find the determinant of it.
instead of this, you can do directly mod determinant of A, and if A is the square matrix of 3 cross 3 order, then it will be 3 minus 1, means you can write here determinant of A square. मतलब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर दें, बट इन विच मैट्रिक्स, व्हेन द मैट्रिक्स इज ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर. तो इसको हम फॉर्मूले फॉर्म में लिख दे रहे हैं, मोड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n minus 1, where n is order of the matrix. Okay. So by this way you can get your solution in the exercise 4 point, I think it is 4.4 in the ISC mathematics by ML Agarwal. So you can do the questions from this exercise 4.4, and this is the book. So 4.4, the every questions is of same type. I'll tell you some more things, but in the next part of the video. So you must watch, and earlier video also you watch, then you can understand the meaning of the determinant, meaning of the matrix, how to find the inverse of the matrix. Also stay home, be safe. Thank you.